जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आप सभी के साथ एक संगत द्वारा किया हुआ सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप इसे पूरा सुने और गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आप सभी के साथ आगे शेयर करें ताकि संगत का भी भला हो सके। आप गुरु जी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी सत्संग आगे सुनने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी for inviting me for this particular session. बहुत बहुत शुक्राना है आपका. I actually don't consider myself a very loyal संगत. वो तो आप खुद decide करोगे in the future. I'm still a learner, still a beginner. बहुत कुछ सीखना है आपसे. I can speak very well in front of many people, big audience, लेकिन गुरुजी के सामने सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. कितना भी पॉइंटर्स करें, कुछ भी करें, बट फाइनली वही बुलवाएंगे जो बुलवाना चाहते हैं. गुरुजी साथ रहना एंड प्लीज calm me down. I'm really nervous. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी for inviting me. This is the only way to calm myself down. गुरु जी हमसे कब से जुड़े हैं ये तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते, because every soul is picked, hand-picked by Guruji. And I would say that actually I'm coming from a family where my mom used to actually just light a lamp in the morning, in the evening. बस यही हमने सीखा है बचपन में. कुछ ज़्यादा फास्टिंग वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं ऑफ दैट सॉर्ट. लेकिन हम हमेशा यही बिलीव करते थे जो माँ मम्मी कहती थी कि ऑलवेज हेल्प एवरीबॉडी दैट यू कैन, एंड दैट्स द बेस्ट रिलीजन दैट वी कैन फॉलो. बाकी पूजा पाठ वगैरह किसी चीज़ में हमने मम्मी को पाठ करते हुए देखा ही नहीं था. एंड I am also probably one of those because finally the children follow whatever is done in the house. But yes, every birthday में हम अपने मंदिर वहाँ जाते थे जहाँ हम बड़े हुए, राउरकेला में. हमारे घर के पास शिव जी का मंदिर था. So somewhere or the other Shiv ji came into our lives. At least during birthdays mama would take us to Matha Teko and then we used to come back home. Every auspicious occasions we used to go to that same temple. बट दूर दूर तक कहीं भी हमारे यहाँ शिव जी का कहीं भी वो नहीं था, स्वरूप भी नहीं था. एंड वी यूज्ड टू एक्चुअली बिलीव अ लॉट इन हनुमान जी, राम जी, एंड एक वेंकट रमणा टेम्पल. इट इज इन मैंगलोर, क्लोज टू मैंगलोर एक्चुअली, अ प्लेस कॉल्ड मुल्की. वहाँ हम बहुत बिलीव करते थे क्योंकि माय ग्रैंडफादर, माय मॉम, हम सब उन्हीं को बिलीव करते थे. शादी भी मेरी वहीं से पूछ करके हुई, जैसे हम नॉर्मली आपने देखा होगा संगत जी द मूवी कांतारा.
जहाँ पे भगवान जी प्रकट होते हैं एंड देन दे आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। उसी तरीके से आउट ऑफ 4 नेम्स मेरे हस्बैंड का नाम सेलेक्ट किया गया था एंड आई हैड टोल्ड माय मॉम दैट वहाँ से जो भी नाम पिकअप होगा आई विल डेडिकेट माई एंटायर लाइफ टू दैट पर्सन। तो गुरुजी आप जो भी कहें, भगवान, उनको तो पता है, सारे जोड़ी लिखे हुए हैं, किसको भगवान के तरफ लेके जाना है, किसकी जोड़ियां बनानी है, सब कुछ तय किया गया है, सब कुछ लिखा हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग। सो दैट्स हाउ आई गॉट मैरिड टू a person whom I actually never wanted to get married to. Uh, that's another big satsang, but I will share some other time. उसके बाद I got married and I went to Mumbai and हमेशा एक आम लेडी की तरह I used to always pray for the well-being of the family and I just wanted to be stress-free always. My bhakti as such was never there. My prayers to God was always कि हम ठीक ठाक रहें, अच्छे से रहें, stress free रहें, healthy रहें. But I was the kind of person who would always get involved with everything like face reader बोलो आप, horoscope बोलो, कोई बोले आपको ये रिंग पहनो, ये स्टोन पहनो. I would literally be into all those things. So I just don't know how I used to get entangled with all these kind of things and my mom would say पता नहीं ये लड़की कहाँ से ऐसे हो गई है, हमारे यहाँ तो कोई भी ऐसा है नहीं. Even हमारे community में I belong to a Konkani community which is a small community which is from Mangalore. And even the marriages that are fixed with the matching horoscopes and all those things. पर मेरी शादी तो वैसी हुई नहीं थी. We had asked the question at Mulki temple and that's how my mother believed in picking up the right person through the temple. But I was the kind of person I would always go and show my horoscope or my son's horoscope or my husband's. तो ये सारी चीजें I used to do a lot and I used to get very fascinated with the occult sciences. कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा खिंचाव था, रुचि भी बहुत थी मुझे. So I was even involved with the some tantric who had come from Assam to Mumbai. And it so happened that I'd gone with a friend of mine and she said कि चलो आशिता हम चलते हैं वहाँ पे and let's see what he has to say. So as usual, as I said, I am attracted towards all these things. तो हम चले गए उनके यहाँ. It was in New Bombay. There when I went in, he said, आपके husband क्या चलाते हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं? I said वो स्कूटर भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं. तो कहने लगे कि उनका स्कूटर चलाना बंद करवा दो. मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि उनका ऐसी जगह पे एक्सीडेंट होने वाला है, you may have to feed him for the rest of your life. तो मैंने कहा ओ माय गॉड, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कुछ उपाय बताए. मैंने कहा मैं सब उपाय उपाय नहीं कर सकती, आप खुद कीजिए एंड यू कैन चार्ज मी वॉट एवर इज देयर. तो ऐसा हुआ कि ही सेड ठीक है एंड देन some puja and everything he did. And after that, Shama Karna Guruji, I don't remember the dates and the years properly, but I guess it was sometime in 93 when my husband had gone to uh, Saudi Arabia, and there he's actually a ceramic engineer, so he was actually there for a construction of a particular plant, जो कि बहुत ही नया था. And during the lunch hours, he was just sitting down and playing with a few pebbles of magnesite. And just behind him, there was a pile of magnesite bags, each weighing about 1,000 kilos.
and one of the bags lost its center of gravity and वो bag उनके पीठ के ऊपर गिर गया. So it was literally second life, I should say, for him, because just to have a 1,000 kilo magnesite bag on your back, and it hurt his vertebral column D12, which makes a person lie down on bed forever. And the same year, my Mausaji also had met with an accident, D12 again, and he was bedridden for the rest of his life. And by God's grace, मेरे हस्बैंड उसमें से भी निकल आए, क्योंकि जब भगवान को पता है कि इस सोल का अभी तक भक्ति के प्रति अपना जर्नी खत्म नहीं हुआ है, so he will definitely not allow that soul to leave this planet. So obviously that was the biggest grace we think maybe Guruji had come at that time itself in the form of Sai Baba, because I used to follow Sai Baba then. Whom have I not followed? Oh my God. I have a list. I have Sai Baba, I have Bhau Maharaj, who was in Thana, then Sata Maharaj, another saint of Maharashtra. I had also visited Putpati Sai Baba. I had visited Ammaji. You name it, and I have visited so many of them. And I have this terrible attention deficit disorder. I cannot sit straight. I cannot stick to something continuously and keep jumping and jumping, never steady. But it goes to how I get now connected to Guruji, and by God's grace, he still kept me with him, with his magnetic charm and grace. So 2019, I get a call from a staff room colleague of mine, Bajaj Auntie. She sends me satsang from Boston, and I respected her a lot. And she says, Ashita, isko zarur sunna. So finally, what I do is, I said, है क्या चीज? So she said, नहीं, तुम्हें खाली सुनना है, and you can get back to me after that. So I listened to that satsang what she sent. I had to listen to it because मुझे पता था कि बजाज आंटी मुझे कॉल करके पूछेंगी कि did you listen to the satsang? So मैं झूठ नहीं बोल सकती कभी भी. So I said चलो सुन लेते हैं, और right enough बजाज आंटी का कॉल आता है. And she asked me, Ashita, did you listen to the satsang? मैंने कहा हाँ जी, बहुत ही अच्छा था. And she said, ठीक है, मैं तुम्हें और भी भेजूंगी, and make sure you try to attend some satsang. And she explained to me the whole procedure of the satsang. So finally I said, अच्छा, तो कहाँ मिलेगा ये satsang? So I started googling. Google किया तो मुझे पता लगा in 2019 December itself, I came to know that there was a satsang in Scarborough City, which is about 20 minutes from my city, which is Ajax. So I was just telling my husband कि हम चलें क्या, क्योंकि I wasn't sure whether my husband would want to come, because he used to follow Kripaluji Maharaj. I used to also follow Kripaluji Maharaj, but because of certain things which I don't want to get into it, some difference of opinion, I just matha tekoed, and I said I'm going back to Sai Baba. I would not want to be in this particular group. Halaki, Kripaluji Maharaj still impresses me with his wonderful pravachans, जो कि बहुत ही दिल को भाते हैं. आज भी मैं सुनती हूँ उनको कभी कभी, because finally it is food for the soul, and the soul wants to just listen to everything divine. So
but I wasn't sure whether my husband would say yes because वो तब उनको follow बहुत करते थे. तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं चलते हैं सत्संग चलते हैं ना इट्स डेफिनेटली फूड फॉर द सोल सो हम चलेंगे so before that he found out the phone number from me of नीता आंटी वो मुझे बाद में पता लगा कि वो उनका नाम है और वो उनके घर में सत्संग हुआ था दिसंबर 2019 में सो ही आस्क्ड हर कि क्या लेके आना है हमें तो नीता आंटी ने कहा कुछ नहीं जी आप बस आ जाओ तो फाइनली वी वेंट on the way on the expressway I was just thinking आप जो कुछ भी हो गुरुजी कोई भी हो आप जब मैं आऊं वहां सत्संग के लिए you should be seated just like Sai Baba so I'll know that it's you it's Sai Baba and lo and behold हम जब नीचे उनके बेसमेंट में गए तो हमने बिल्कुल वो स्वरूप देखा जो कि जिस तरह से साई बाबा जी बैठते हैं and then I sat down for the satsang. Such beautiful shabads because I love music. गुरुजी knows कि किस तरह से इस लड़की को बिठाना है मैंने जो कि एक सेकंड भी बैठ नहीं सकती है स्थिर. So I just fell in love with those shabads और पता नहीं क्यों आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मेरी जिंदगी में तो उस समय कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था. Everything was perfect, everything was fine. तो आंसू क्यों आ रहे? And then I felt it's just nothing but cleansing of the soul because तब तक तो मैं बहुत कुछ जान चुकी थी that in life we have to give time and sit down still and just give the soul the food it needs. तो मुझे बहुत अच्छा लगा and after that I came back home and I kept looking every time I kept looking for more and more of satsangs, more of shabads. And I started making my own list when I was listening to the satsangs कि ये सारे blessed shabads होते हैं गुरुजी के. I just came to know only through those satsangs that I used to listen. Through the satsangs इतने सारी चीजें सीखने को मिली मुझे from all our great sangats. तो फिर मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट सत्संग कहाँ मिलेगा मुझे. आई वॉज जस्ट डेस्परेट. उन्हीं दिनों में सीरियल क्या है फिल्म क्या है कुछ नहीं पता मुझे. बस आई वॉज जस्ट ग्लूड टू सत्संग्स आफ्टर सत्संग्स और उस समय पता ही नहीं चला कि गुरुजी क्यों हमारे जीवन में आए वो मैं आपको आगे बताऊंगी. और ही हैज हिज ओन टाइम ऑफ एंट्री इनटू आवर लाइव्स. तो ऐसा हो गया कि you know while I was listening to the satsangs I kept googling also कि कहाँ पे है नेक्स्ट सत्संग कहाँ अटेंड कर सकूँ मैं. फिर ऐसा हुआ कि 2020 में जनवरी में मुझे बिल्कुल 8 minutes away from my house I got to see that there was a satsang. And those days those apps were there satsang near me which was very convenient to find out कि कहाँ पे जा सकते हैं हम. So I figured out it was the current mandir management person. Her name is Amanika aunty. उनके यहाँ उनका पहला सत्संग था वो उस समय. And I just again loved it. And जब हम निकल रहे थे वहां से अमानिका आंटी ने एक अच्छे से क्यूट से बास्केट में सारे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे. So I was asking her कि ये हम लेके जा सकते. She said हाँ जी आपके लिए है आप ले लो. So finally I picked up quickly 2 of them. I wanted to pick up 3 but I wasn't sure whether my husband would keep Nada Guru's swaroop with him. So I just picked up 2, came back home, quietly put one in my son's wallet without his knowledge, and I kept one with me. So ये हो गया Jan 2020 and then right after that COVID hit.
और कोविड हो जाने के बाद में there was definitely no going anywhere, but yes, all throughout, I worked, my husband worked, and Guruji's grace was all upon us. हमें कुछ भी नहीं हुआ actually. So everything went on very smoothly. But in 2021, I came to know from my brother, and I think that's the only reason that Guruji came into my life, because I had already started sending all throughout in 2020 satsangs to my brother, his son. And at that moment in 2021, I think he had just finished his, my nephew had finished his civil engineering. And in the month of April 2021, I came to know that he has gotten into a very severe court case. And I think Guruji came because of that. And he's still holding our hands. किस तरह से हम इस फियास्को से जूझ रहे हैं ये हम ही जानते हैं, और गुरुजी किस तरह से हमारे को फ्लोट करा रहे हैं उसमें के इसके थ्रू. It's amazing to see that if probably Guruji wasn't with us, we would have been a real disaster thinking about it. But he has somehow taken us through very, very comfortably, and the case is almost coming to an end now, and we are hoping that someday we would be able to do a nice satsang on that once it's totally over. Iske baad, I would like to share a satsang about how Guruji pulls, if one person in the family starts following him, or rather he starts to take you in his fold, धीरे धीरे किस तरह से सभी लोग उनके फोल्ड में आ जाते हैं. It so happened that my husband, I don't know कहाँ से वो बैठ गए, और I never knew कि वो sketch करते हैं. He had somehow sketched Guruji's Swaroop, because I did not have a big Swaroop like what I have behind me. He just made that sketch, and then I was so amazed कि मैं जब काम से वापस आई तो मैंने देखा कि अरे वाह, इतना अच्छा स्वरूप आपने बनाया, ये वाला इतने साइज का तो हमारे पास है ही नहीं. तो मैंने कहा चलो, let's do other सम्मान of this by putting it inside a frame. तो मैंने उस स्केच को एक अच्छे से फोटो फ्रेम में इसको डाल दिया, and I just kept it on a pillar bang opposite the entrance of our house. And right 2 weeks after that, broad daylight, around 11:30 in the morning, it so happened that some burglars broke the door. My son was in the kitchen, my husband was in the family room watching the TV, and my son heard that bang. The door broke, and he started just chasing them out, and then immediately called the police. And the police was so surprised to see that broad daylight, two cars parked, and they have the audacity to come and break the door open like this. But I was immediately 100% sure कि ये कैसे बच गया सब कुछ. It was only because of Guruji's sketch that was on the wall which protected our house. So Shukrana Guruji, Anantam Shukrana for that. And very quickly he somehow made sure that the door was locked, at least for that night. And then the insurance people came and they did all the changing of the doors and everything later on. But again, I have 100% surety that it was Guruji who protected our house at that time.
I have another beautiful satsang to share again, my husband's satsang, which is very dear to my heart. एक बारी ऐसा हुआ कि मंदिर में, हमारे टोरंटो मंदिर में, which was in Pickering, अब उसका लोकेशन चेंज हो गया है. So during that time मंदिर में एक दिन I had already shared about this sketch wala satsang in the mandir. So Amanika auntie knew that मेरे husband थोड़ा बहुत sketch विच कर लेते हैं. But she saw one particular Charan Swaroop ka painting, actually, I would say, in the mandir, and then I had also seen it, but after some time it was gone. So maybe it was given to somebody, we don't know. And she asked me कि आशिता आंटी जगदीश अंकल ने बनाया था दैट पर्टिकुलर चरण स्वरूप. मैंने कहा नहीं जी, उन्होंने नहीं बनाया, वो तो ऐसे पेंट भी नहीं करते. So she had actually not seen my text message before seeing that particular Charan Swaroop in the mandir. I had actually sent her a text message ki Manika auntie, could I get a Charan Swaroop from the mandir? But she always answers my text. That particular text she had not seen, and that is all Guruji's Leela. And she met me and then she asked me about that painting Charan Swaroop which was there in the temple. So it so happened while we were leaving the mandir premises, she told my husband कि जगदीश अंकल आप प्लीज चरण स्वरूप की सेवा लीजिएगा, आप प्लीज बनाइए, कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए, सो आई कैन गिव इट टू देम. सो माय हस्बैंड वाज शॉक्ड. ही सेड मैं तो पेंटिंग करता ही नहीं हूँ और ये मानिका आंटी ने क्या बोल दिया मुझे. मैंने कहा आप कोशिश करो, आपको सेवा मिली है, आपको करनी पड़ेगी. तो he said मैं कोशिश करूंगा लेकिन पेंट नहीं करूंगा, मैं तो कलर पेंसिल से करूंगा. मैंने कहा दैट इज ऑल, यू सिट एंड डू एज पर हिज गाइडेंस. जो भी गुरुजी आपसे करवाएंगे आप उसी हिसाब से कीजिएगा. And it so happened that that particular Charan Swaroop was made, but it was made with color pencils, and it turned out very beautiful. तो जब उन्होंने कहा कि कैनवास पे पेंट करके दीजिएगा, तो इन्होंने कहा कि चलो उसी चरण स्वरूप को हम जाते हैं और स्टेपल्स में हम जाते हैं और उसको वहां से मैट कैनवस में उसको वो प्रिंट करवा देंगे, एंड देन वील गिव इट टू द मंदिर. इट सो हैपन दैट हम स्टेपल्स गए, पर वहां पे उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा क्योंकि हमारे को डेडलाइन दिया गया था that you have to give those Charan Swaroops. I can't recollect the number of days that she gave us. So finally, we went to a small store which was right opposite Staples. It was a person who was having, it was a Sri Lankan person. So it so happened that Guruji has his own ways. किस तरह से किसके हाथ से उन्होंने करवाना है वो वही जानते हैं. And as he was taking the order, he said, yes, I can do it. I will do it in canvas. And it so happened that जब वो print कर रहे थे, तो he was busy telling कि how his wife is having some sickness and they're having a tough time. तो तभी मैंने सोचा, अच्छा गुरुजी आप अपने चरण स्वरूप इनसे करवा रहे हो, अब पता लगा कि कैसे आप करवाते हो सारा काम. So finally, it so happened that that Charan Swaroop was made from that particular store, जो कि गुरुजी के अपने तरीके होते हैं, वो बाद में समझ में आता है. And then finally, we got the prints and we gave it to Amanika auntie, and Amanika auntie started giving it to whoever she wanted. कुछ extra copies भी हमने दिए थे उनको. So now we don't know कि उन्होंने किसको दिए, क्या हुआ, we have no idea. It so happened that one of the Sangats, till today we don't know who it is, called up Amanika auntie and told her कि भाई मुझे एक सपना आया और सपने में मैंने एक चरण स्वरूप देखा और वो चरण स्वरूप मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है. गूगल भी किया हमने सब कुछ किया,
एंड जो मैंने सपने में देखा मुझे वही चरण स्वरूप चाहिए. सो वी वर ऑल सरप्राइज्ड. आई मीन अमानिका आंटी वाज सरप्राइज कि कौन से चरण स्वरूप ये बोल रही है. तो फाइनली इट स्ट्रक हर दैट देयर इज अ पर्टिकुलर चरण स्वरूप इन द मंदिर जिसका प्रिंट है. सो शी टोल्ड द पर्सन, द संगत, दैट आप मंदिर आ जाइए एंड आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि उसमें से प्रिंट्स बचे होंगे या नहीं, वो ड्रॉर खोलने के बाद पता लगेगा. सो वी विल गो एंड सी एंड देन आई विल सी इफ दैट्स द वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो दे वेंट टू द टेम्पल एंड दैट पर्टिकुलर संगत जिनको सपना आया था वो गई और उन्होंने दिखाया और कहने लगी, ओ माय गॉड, दिस इज द सेम स्वरूप दैट आई गॉट टू सी इन माय ड्रीम. तो अमानिका आंटी ने कहा कि शायद ये आपके लिए बचा है तो आप ले जाइए. सो शी वॉज सो ओवरवेल्म्ड. उन्होंने ब्यूटिफुली थाली में रख के सर पे रख के उनके हस्बैंड अपनी गाड़ी पे लेके गए एंड दे इंस्टॉल्ड इट अपने मंदिर में. और उन्होंने फिर उसका पिक्चर निकाला और उन्होंने अमानिका आंटी को भेजा. And Amanika aunty forwarded me that particular swarup and she said, ये देखो कैसे गुरुजी करवाते हैं, किस लिए करवाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं लगता. I said, yeah, really, कुछ समझ में नहीं आता. इसी तरह से एक और सत्संग I would love to share is about my condition. Um, Sometime in 2023, I think it was in the month of June, यहाँ पे टोरंटो मतलब एजैक्स में हम नॉर्मली एक अमृत वेला अटेंड करते हैं, which I always look forward to because that's the only place where I can really sit throughout the Amrit Vela time at a Manika auntie's place again. Um, so in that particular satsang, which is the first Sunday of the month, हमेशा आज तक हो रहा है वो. Um, she normally I try to take the save of something, so I made particularly ragi laddus for that particular satsang. And once I ate the laddus, I just felt as if I had some stale, जैसे बहुत stale हो जाता है कोई आटा, तो उस तरीके का metallic taste आने लगा. And I wasn't feeling the sweetness of the laddu at all. And all of the rest of the sangats were saying, ये क्या बनाया आपने, इतना जबरदस्त बना है, this and that. And then I was like, मेरे को क्यों नहीं आ रहा ये taste? So I came home and I told my son, how is it? Even my son said, Ma, this is out of the world. आपने क्या बनाया ये? आपने कभी नहीं पहले बनाया. मैंने कहा मुझे नहीं पता बेटा, बट मुझे तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है. एंड देन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग माई सेल्फ एंड मेरे को किसी चीज का टेस्ट नहीं आया. मैं खाना बनाती थी, न नमक न मिर्च, कुछ नहीं आता था टेस्ट. स्वीट तो दूर की बात, स्वीट बिल्कुल नहीं. सो फाइनली आई स्पेंट अ फ्यू मंथ्स. आई सेड चलो कोई बात नहीं, होगा कुछ चल रहा होगा सिस्टम में. But it started bothering me when I was not able to really taste anything, and I wasn't sure कि ये खाना कैसा बन रहा है. I had to literally call my husband, चलो नमक चखो इसमें कैसा है. मेरा बेटा होता था तो उसको बुलाती थी मैं, but I was not able to taste anything. Finally, out of botheration, but I did not ask anything from Guruji because I knew कि भाई जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, से ज़्यादा क्या होगा, weight loss हो जाएगा मेरा, that is best. बट एट द बैक ऑफ द माइंड वो होता है ना टेंशन की, भाई अगर मैं खाना बनाऊं किसी के लिए तो फिर कुछ तो पता लगे कि भाई क्या बना रही. So I went to the doctor and the doctor said, even my family group, I have so many doctors in my family group, they said definitely तुम्हें कोविड हुआ रहेगा कभी ना कभी, तो तुम्हारे को पता नहीं चला है इसलिए तुम्हारे टेस्ट बड्स चले गए हैं, it will come back eventually. But I said nothing of that sort. I never had any fever. I never had any COVID symptoms. Nothing of that sort.
So even the doctor said, okay, let's wait and watch and let's see कि क्या होता है. So she waited for some time, but it never came back. And again, she called me and she said, I think we should do MRI of the brain. मैंने कहा अब ये brain पे क्यों जा रहा है सारा? Anyway, I said चलो. I just went and went for the MRI scan, and everything came back normal. Jai Guruji for that, and it took its own sweet time for my taste to come back. But surprisingly, I have to share this, Sangaji. Whenever I used to have the Langar Prasad in the mandir, I used to be so happy कि मुझे सब कुछ टेस्ट करने को मिलता था. And when I would come back home, back to square one. सब कुछ वैसे का वैसे. No taste, nothing. So it took its own sweet time, but Guruji has given me back everything, whatever I wanted, and Sara taste, everything is back to its normal self. And संगत जी, आई रियली डोंट नो कि और क्या शेयर करूं. बहुत सारे सत्संग हैं, इतने सारे हैं कि देयर इज नो एंड टू इट. जितनी भी किताबें लिखो आप, it doesn't stop because every day is like a satsang. I think I can share one more. It so happened that this particular basement में जहाँ मैं बैठी, I had decided to have a satsang on the 20th of July. I can't recollect the year. Maybe 2024. I'm not too sure. It so happened that we had torrential downpour and all the water came into the basement. Everything got wet. The carpet, it was carpeted at that time, and all the water came, but Guruji's darbar was absolutely dry. तो उन्हें पता है कि भाई सारा वेट कर दो, इनका कार्पेट्स निकलवा दो. And finally we had the flooring done, wooden flooring done. So he has his own ways, he has his own style. इसको हम challenge भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते. There's one more satsang which I would love to share is about my job. 2023 May, I started telling my boss that I would like to have a change. Can you change my locality? Because I'm at the front desk of a condominium. And I'd already worked about 18 years in a particular condo. तो मैंने कहा कि बहुत busy चल रहा है गुरुजी, इसको change करवा दो आप. And lo and behold, when I told my boss कि भाई कोई जगह है तो बता देना, he said, हाँ, I think there's one coming up close to your house. It will be much closer to this particular location where I was. And he said, do you can go and see whether you like it. If you like it, get back to me and let me know. If you would want a change, then I could arrange an interview for you with that manager. मैंने कहा ठीक है. So he sent me, it's a condominium in Scarborough. तो जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो हम जब एक पर्टिकुलर स्ट्रीट से गुजर रहे थे, just before going to the condo, there was a wall full of butterflies, beautiful different colored butterflies painted on the wall. और मैंने कहा लो, गुरुजी ने तो जवाब दे ही दिया, मैंने क्या सेलेक्ट करना है, ये तो उन्होंने ही सेलेक्ट किया है, इन्होंने इशारा दे ही दिया है बटरफ्लाइज को दिखा करके. So it was like I knew it's going to be the place for me. And as soon as I reached, I had a very good feeling about the place. I told my boss, I just love the place, and yes, you could arrange a meeting of mine over there. As soon as I met the manager, I don't know, she had wonderful vibes, and she said, I get wonderful vibes from you too, and I would like you on board. And hardly few sentences, and she just picked me. So Guruji has his own ways again. Jai Guruji, Shukrana Guruji. So the last thing what I would actually like to discuss before I wind up is what have I learned from Guruji? I'd really love to say this to all the Sangats. Probably this is
for most of the newcomers जो अभी आ रहे हैं या नए जुड़ रहे हैं, I would really like to share what I have learned, and probably I'm still learning. I'm sorry to say that. Every day is a new learning, every day is a new lesson from most of the satsangs that we listen to. What have I learned? Let me tell you that. I have learned that किसी भी सत्संग में आप जाओ, please, please be there seated at least 15 minutes before time. Let's not make Guruji wait for us, which is really wrong. हम किसी क्लास में भी जाते थे तो हम हमेशा जल्दी जाते हैं ना, तो उसी तरह से let's always go early and wait and welcome Guruji as it has to be done. Secondly, what have I learned? I have learned that we should not waste Jal Prashad, Chai Prashad, Langar Prashad. This is something which I have been treated so well with the Prashad, and even my diabetes levels and everything's are under control with the Langar Prashad. My tongue situation was cured with the Langar Prashad. So let's give due respect to that. And I don't understand सत्संग में स्नैक प्रसाद हमेशा होता है. I just don't get it. जब आप चाय प्रसाद सर्व करते हो, why don't we just straight have langar prasad and that's about it. House satsangs में specifically, I don't think we should have the need for a snack prasad. Then I would really like to say what I have learned. I have learned a lot about sangat sharing. Satsang sharing is so important. This is a crucial part of a satsang, basically. And sorry to say, but अभी जो मंदिर में 3 घंटे का सत्संग रखते हैं, I am not able to stay till the end. I come home and I listen to the Toronto link because we are actually sharing a car also now. We have to listen to the satsang before winding up. I totally believe in satsang, seva, simran. सेवा भाव जो है वो गुरुजी के पास इतना सीखने को मिला है. A lot. I should thank him for giving me the seva also. I would not like to discuss what seva because then it doesn't remain a seva. लेकिन सेवा की जो भावना है वो बहुत बहुत important है. And hats off to all the sevadars from the bottom of my heart. Hats off to all the sevadars of every mandir, and my special thanks to the Toronto mandir. इतनी ठंड में भी, माइनस में, किस तरह से, I'm sorry if I get emotional. I don't know how this sangat stand outside in the cold and guide the cars. It's amazing, Guruji. कैसे आप कराते हो मुझे नहीं पता. Do listen to all the sevadars. I came to know that मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक संगत जो है गाड़ी पार्क कर रही है, and she's busy getting angry with all the sevadars over there and she wants to go and park in a particular place. तो हम मंदिर क्यों आते हैं, हम क्यों सत्संग के लिए आते हैं when you are not following the core teachings of Guruji? It's so sad that हम आते हैं और हम गुरुजी के संगत कहलाते हैं और ये सारी चीजें करते हैं. ABCs जो गुरुजी बोलते हैं मत करो. And this is what people do. We have to listen to the navigating team. We have to somehow have that particular, respect for the people who are doing all the seva for us. किस लिए कर रहे हैं वो सारा सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ अच्छे से चले. We go to the temple, we should not look into our cell phones. You should not just be bothered about taking pictures. क्या हो रहा है, हम गुरुजी के लिए आ रहे हैं. Why are we doing all this drama of taking pictures? संगत वो सेवादार बता रहे हैं आपको कि everything is online, आपको सब कुछ मिलेगा, but yet we have to do that.
डू नॉट टॉक, गुरुजी बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए. कहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस कभी कभी होता है. इट्स वेरी सैड टू सी दैट पीपल आर not following the basics. What have I learned? I have learned that we have to always play the blessed shabads, especially during house satsangs. You can play all the blessed shabads, then you can play all the bhajans if you wish. If you have some singers who have come, you can definitely arrange for them, which is what our mandir does. हम कम से कम 1 घंटा तो शब्द सुनते ही सुनते हैं. This is what the food for the soul is. And then whoever has been invited, फिर हम उनसे बोलते हैं गाने के लिए. इतना सिंपल गुरुजी ने सारा करके दिया हुआ है और सब. आई डोंट नो व्हाई पीपल हैव मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड. सारे जो स्वरूप हैं उसके ऊपर सारे लिखते हैं. सो डिसहार्टनिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स. क्यों हम इसके ऊपर एआई बनाते हैं आजकल. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी एनकरेज दोज काइंड ऑफ यूट्यूबर्स who are just generating some income. It's so sad. What have I learned next? We should not actually ask for anything. मंगो नहीं मन्नो. बस मानो आप. आपका सब कुछ हो जाएगा. Everything. Let's think positive and take care of each other in the family. We have to keep our area clean. We have to make sure that everything is in order. We have to chant the mantra jap. It's so sad that some of these people in the YouTube channels, I have noticed that they are, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guru Pa Sada Sahai. Why are we changing it to Guru Pa? I don't understand. क्या जरूरत है ये सब करने के लिए? It's so sad to see that. I don't know, Sangaji. It's very disheartening to see. It's also one thing I would like to share that, I was introducing Guruji to a particular resident in the condominium. She happens to be from Jalandhar. She's finally following Guruji. She says so, but she's being lured away by people, her relatives, and all of that. कि आप किस उसमें पड़े हुए हो? What are you following? And this and that. Finally, what you have to do is you have to judge yourself and you have to understand कि आपने कितना सीखा है. And I always used to tell her, don't follow those satsangs with जहाँ पे ये पुत्तर वुत्तर लिखा रहता है YouTubers के broadcast में. Guruji never said puttar to anybody. So clearly it has been mentioned. And then, it's so sad that I came to know from the lady from my condominium that there are people who are saying कि आपको अगर कोई चोला सेवा चाहिए, कुछ भी सेवा चाहिए, आप बता दीजिएगा, आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए. And guess what? So sad. It's so sad to see that those people are charging for letting you use or borrow the cholas from the people who are saying that they are doing seva. This is not seva. This is looting person by taking money from the person and giving the cholas in the name of seva. You have to watch the way the people in Toronto are doing. Specifically, I have to take the name of the Jadhav family, Manika and Sameer uncle. कितना करते हैं. उनके यहाँ जो चाहिए आपको चोला आप लेके जा सकते हो. गुरुजी has never asked for anything high and mighty. आप अगर मेरे दरबार में आओगे मेरे पास कोई चोला वोला नहीं रहता है. It's so simple. मैं बस जो मुझे नए दुपट्टे मिलते हैं मैं उसी से कर लेती हूँ अपना काम. Amanika auntie always says you can always take from me, Ashita auntie, but again, going and getting things and again returning the things, I would rather have those people have it जिनके यहाँ जाके सेट करना होता है. उसकी भी सेवा लेती हैं उनकी बेटी और सारे बाकी सेवादार भी करते हैं, जाके सेटअप कर देते हैं सब कुछ. So I feel if I can do things myself, then why not I do it myself? Because I really enjoy doing it in my own way. So
this is all I have to share, Sangatji. I hope I have not taken much time. Vasan uncle, can I sing a few lines, Vasan uncle? Yes, you can sing, please. Go ahead. Thank, thank you so much. तू मेरे तू मेरे साथ है, तू मेरे तू मेरे साथ है, फिर डरूं मैं भला किस लिए, रखूं शिकवा गिला किस लिए, सर पे मेरे तेरा हाथ है, तू मेरे तू मेरे साथ है, तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा, तू ही नौका मेरी, तू ही साहिल मेरा, तू ही कोशिश मेरी, तू ही हासिल मेरा, तू ही दिल, तू ही जज्बात है, तू मेरे तू मेरे साथ है, तू मेरे तू मेरे साथ है, तू मेरे तू मेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सिंप्लिसिटी बहुत, गुरुजी ने कुछ नहीं पूछा है। लेट्स बिगिन विद लंगर प्रसाद। एक्चुअली लंगर प्रसाद इज सो सिंपल। ये रोटी प्रसाद, दाल प्रसाद, चाहे गिली प्रसाद हो, गिली गिली सब्जी हो, सूखी सब्जी, चटनी और एक मीठा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना लंबा चौड़ा कभी कभार हो जाता है, कभी कभी दो मिठाइयाँ हो गई। I mean, Guruji ने कितना simple रखा है. As I said, even the darbar also. Why are we trying to have such elaborate things in the darbar? सिंपल ही चाहिए उनको, तो बस एक मैट भी बिछा दो, गुरुजी बोलते हैं मैं आ जाता हूँ। आप बस भाव रखिए अपना, सिंपल भाव से आप मुझे प्यार से बुलाइए। बस वो प्यार के भूखे और किसी चीज के भूखे तो है ही नहीं, बस प्यार से सब कुछ करना है हमने। and everything is nothing but so simple, so simple. उनकी teachings इतने simple हैं, no अहम, no वहम, nothing of that sort. किसी चीज में उनका वो नहीं है कि इसमें लंगर प्रसाद में प्याज लहसुन कुछ नहीं चलेगा, nothing of that sort. कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने ड्रिंक से लेकर के नॉन वेज भी किसी का बंद नहीं करवाया है। कहते हैं कि अगर मैं बंद करने बोलूं तो आप बंद करोगे, पर इट हैज टू कम फ्रॉम योर विद इन, एवरीथिंग हैज टू स्टॉप फ्रॉम विद इन, दैट्स इट। बहुत सिंपल, हमारे को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। ही हैज सेड सो क्लियरली, मंदिर आते हो, मंदिर से सीधे घर चले जाओ, कहीं नहीं जाना है आपने, सीधे घर जाना है। बेसिक चीजें अगर हम फॉलो करें तो we will be called his मुट्ठी भर संगत डेफिनेटली, बट बहुत मुश्किल है उनकी मुट्ठी में आना, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज लाइफ इज सो टफ। हम सब ऊपर की दिखावे में चले जाते हैं एंड वी आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द कोर policy of what Guruji wants us to do.